finding the great circle distance. So once we have understood about this triangle which we have made, so it is very easy to calculate the great circle distance between 2 points. So यही ट्राइंगल जो हमने अभी व्हाइट बोर्ड पे बनाई थी, अब इसी ट्राइंगल को हम अपनी प्रेजेंटेशन में बनाते हैं and we will understand how are we going to calculate this great circle distance using the cosine formula. So let's go to. So beta, I am going to repeat this triangle. ये जो ट्राइंगल अभी आप यहाँ पे देख रहे हो PAB triangle, it is exactly the same what we drew on the whiteboard. So मैं ये दोबारा यहाँ पे आपको एक बार explain करूंगा and then we will see how we calculate the great circle distance. कि ये अर्थ पे हमारी एक इनिशियल पोजीशन इन्होंने दे दी पॉइंट ए, दिस इज अवर इनिशियल पोजीशन, एंड ये हमें इन्होंने हमारी डेस्टिनेशन पोजीशन दे दी पोजीशन बी, एंड दे वांट अस टू फाइंड आउट द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस बिटवीन देम. तो मैंने ये ए और बी को ज्वाइन कर दिया है विद रेड मार्कर, एंड मैंने इनको ज्वाइन किया है यूजिंग ए जीसी ट्रैक. तो दिस इज ए जीसी ट्रैक. बेसिकली मुझे ये जीसी ट्रैक ए बी को फाइंड आउट करना है. अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं अर्थ की मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है. इसमें जो ये डॉटेड लाइन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड क्यू, दिस इज द इक्वेटर, एंड ये जो पी पॉइंट है दिस इज माय नॉर्थ पोल, एंड साउथ पोल इज नॉट शोन हियर बट वी कैन शो इट एज पी डैश. कि मैंने P डैश से साउथ पोल को भी यहाँ पे बना दिया है. Now if I draw a line or if I draw a circle joining the north pole, my starting position and the south pole, that is PAP dash. Let me mark it with a green highlighter. PAP dash. Now what is this circle beta? This is a great circle passing from both the poles and passing from my initial position. This is the definition of meridian or longitude. So this PAP dash is basically the meridian of A. And similarly, if I draw this great circle PBP dash, this will be the meridian of my destination. So PA and PB are the longitudes or the meridians of my initial and final positions. तो ये दोनों मेरिडियन आ गए मेरी डायग्राम में. Now if you look at this diagram, तो यहाँ पे आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है. कौन सा एंगल? दिस एंगल, एंगल P. So what is this angle? This is the angle at the pole contained between meridian of A and meridian of B. So can you tell me beta, what is this angle? D long. D long. D long. Very good beta. This is the definition of D long. Angle at the pole contained between meridian of two places. So it is the D long between A and B. अब इन क्वेश्चंस में दे गिव अस बोथ द पोजीशन. पोजीशन ए, उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ये हमें प्रोवाइड करते हैं, एंड पोजीशन बी, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड इज गिवन टू अस. This is what is given in the question. Now since you have the longitudes of both these places, you can easily calculate this angle P. This is the D long between A and B. हम A और B के बीच का D long निकाल सकते हैं, and this will be our angle P of the triangle PAB. ये एक एंगल हमारे पास आ गया. अब बेटा come to the side of this triangle PA, पापा अल्फा साइड. इसी पापा अल्फा साइड को आगे अगर कंटिन्यू कर दें अप टू द इक्वेटर, so let me mark it by orange color. So A to the equator, this one,
This is basically the arc of the meridian contained between the equator and a particular place. Now, can you tell me ये किस चीज की definition है? Arc of the meridian contained between the Latitude. equator and a particular place. So latitude. Very good. This is the latitude of A. Now, if this is the latitude of A, can you tell me what will be side BA? 90 minus lat. 90 minus. Very good. It will be 90 minus latitude because pole to equator is always 90 degrees. So it will be 90 minus latitude of A. Similarly, what will be side BB? 90 minus latitude. 90 minus lat of B. Very good. It will be 90 minus lat of B. Now, since we have the latitudes of both the places, we have these two sides also. So we can calculate PA, which is 90 minus lat of A. It is also known as co-lat of A. And we can find out PB, which is co-lat of B. और हमारे पास यहाँ पे एंगल P भी है. So you have a spherical triangle here, PAB. हमारे पास कुछ चीजें इसमें known हैं. 2 sides and a included angle. इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा? Cosine formula. Cosine. Very good. So we apply the cosine formula for angle P. जब आप इसे एंगल P के लिए अप्लाई करोगे, तो let me pick up the pen and write it here. It will be cos of angle P is equal to cos of opposite side. Which will be the opposite side? AB. AB minus cos of adjacent side 1, which will be PA, cos of adjacent side 2, which will be PB, all divided by sine of adjacent side 1. So you will have sine of PA multiplied by sine of adjacent side 2. It will be sine PB. So you see here in this formula, we have angle P known, PA is known, PB is known, PA known, PB known. Only unknown here is AB. So you just put these values here and you can calculate side AB of the triangle. AB is our great circle track between A and B. So once you calculate this AB, great circle distance is known to us. Okay. Only thing to keep in mind is कि जो ये AB आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा, that will be in the angular form. Something like, let us say for example, आपने इसे calculate किया और आपका आंसर आ गया 20 degrees 12 minutes. So this is in the angular form like this. But जो हम distance निकालते हैं, the distance should be in nautical miles. So how to convert this into nautical miles? Now on a great circle track, 1 minute of arc is equal to 1 nautical mile. So हमने इस distance को 2012 को whole minutes में convert कर देना है. Once you convert it into minutes, that gives you the great circle distance between them. So if you convert it into minutes, that will be 20 multiplied by 60 plus 12. Okay. 1 to 1 to. Yeah, 1 to 1 2 miles is the great circle distance between A and B. So always remember, cosine formula will give you the side of the triangle in degrees and minutes. For finding the distance, you have to convert it into whole minutes. Convert it into whole minutes, and that will give you the great circle distance between them. So you see here, calculating great circle distance is nothing but a simple application of the cosine formula on this PAB triangle. Okay, अब बेटा इसमें बताओ मुझे कोई डाउट आ रहा है कहीं पे? एक लॉन्जिट्यूड से दूसरा माइनस भी हो सकता है और दोनों लॉन्जिट्यूड ऐड भी हो सकते हैं. ओके, टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गो टू द व्हाइट बोर्ड एंड शो यू. ओके, लेट्स ड्रॉ ए अर्थ हियर. ये हमने अर्थ को ड्रॉ कर द इक्वेटर हियर. बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हम ग्रीनविच मेरिडियन ड्रॉ कर देते हैं. ग्रीनविच मेरिडियन, दिस इज द ग्रीनविच मेरिडियन. Let me write a G here.
Okay. So Greenwich meridian is 0, 0, 0. This is the North Pole. This is the South Pole. अब बेटा आपको दो लॉन्जिट्यूड इन्होंने दिए हैं उनमें डी लॉन्ग हमने निकालना है. Let's say one of the longitudes is 30 degrees east. Now this is the eastern side and this is the western side. So 30 degree east का जो मेरिडियन है वो होगा यहाँ पे. Let me write here 30 east. दूसरा लॉन्जिट्यूड जो इन्होंने आपको दिया है, they have given you 20 degrees west. So let's draw 20 west also. या हमने 20 west भी ड्रॉ कर दिया है. अब इनके बीच में अगर डी लॉन्ग निकालना हो, you can see here that this angle at the pole contained between the meridians will be 30 plus 20. So इस केस में तो दोनों के दोनों लॉन्जिट्यूड ऐड हो जाएंगे और इनका डी लॉन्ग कितना आएगा? इनका डी लॉन्ग आएगा 50 डिग्रीज. ओके, सो ये एक केस आ गया बेटा जिसमें दोनों लॉन्जिट्यूड ऐड हो रहे हैं और डी लॉन्ग मिल रहा है. नाउ लेट्स से कि हमारा जो सेकेंड लॉन्जिट्यूड है वो 20 डिग्री वेस्ट नहीं है. ओके, उन्होंने हमें जो सेकेंड लॉन्जिट्यूड दिया वो दे दिया 70 डिग्री ईस्ट. सो ये मैंने 70 डिग्री ईस्ट ड्रॉ कर दिया है. So if you want to find out the D long between 30 east and 70 east, अब आप देखोगे कि ये ऑरेंज कलर का एंगल बन रहा है. Now in this case, this D long will be 70 minus 30. So longitude same name, the smaller one is subtracted from the bigger one. Longitude opposite name, both are added up to get the D long. So किरत बेटा clear है? Yes sir, clear sir. ओके, बस इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना बेटा. वो क्या ध्यान रखना है कि लेट अस से उन्होंने आपको लॉन्जिट्यूड दे दिया 160 डिग्री ईस्ट, एक लॉन्जिट्यूड दे दिया, और दूसरा लॉन्जिट्यूड दिया डेस्टिनेशन का 160 डिग्री वेस्ट. नाउ बेटा टेल मी व्हाट इज द डी लॉन्ग बिटवीन देम? 40 degrees sir. 40 degrees. वेरी गुड. सो ये वाला मेथड लगाओगे तो ऑपोजिट नेम ऐड हो जाएंगे. ऑपोजिट नेम ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 320. ओके, और अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो, ये डायरेक्शन आ जाएगी वेस्ट. अगर कभी भी ऐड करने पे आपका आंसर 180 से ज्यादा आ जाए, जैसे इस केस में आ रहा है, द आंसर इज मोर देन 180. अब बेटा डी लॉन्ग बिटवीन टू प्लेसेस कैन नेवर बी मोर देन 180. 180 से ज्यादा डी लॉन्ग नहीं हो सकता है. सो अगर ये ज्यादा आ जाए तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने 360 में से माइनस कर देना है. सो 360 में से ये वैल्यू जैसे ही आप माइनस करोगे, आप देखोगे आपका आंसर 180 से छोटा हो गया. और जब भी आप इसे 360 से माइनस करते हो तो जो भी इसका नेम है वो चेंज हो जाएगा. ये अगर वेस्ट था तो 360 से माइनस करते ही ये बन जाएगा ईस्ट. सो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम 160 ईस्ट 160 वेस्ट तो आपका डी लॉन्ग आएगा 40 डिग्रीज ईस्ट. So is it understood beta? Clear to everyone? Yes sir. Very good. और कोई डाउट आ रहा है बेटा? वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा ना 40 डिग्री? नहीं बेटा, पहले देखो 320 वेस्ट आया था, हमने 360 में से जैसे ही इसे माइनस किया तो इसका नेम जो है वो चेंज होके ईस्ट हो गया. पहले वेस्ट क्यों आया था? क्योंकि हम ईस्ट से वेस्ट जा रहे थे. Whenever you go from east to west, डी लॉन्ग होना चाहिए वेस्ट, इसलिए हमने यहाँ पे वेस्ट लिखा. हमें पता चला हमारी फिगर 180 से बड़ी हो गई है, हमने 360 में से इसे सब्ट्रैक्ट किया. जैसे ही 360 से सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो नेम चेंज करना पड़ता है। सो हमने वेस्ट से नेम चेंज करके ईस्ट बना दिया। बेटा क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, ऑल राइट। और कोई डाउट है बेटा? बताओ, एनी मोर डाउट इन दिस? सर एक स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट था, आपने बोला कि इनिशियल कोर्स एंड फाइनल कोर्स डिफरेंट होगा। ओके ओके, सो वी गो बैक टू द ग्रेट सर्कल। ये मैं बेटा व्हाइट बोर्ड पे ग्रेट सर्कल पे वापस आ गया। राइट बेटा, मैंने हाँ बोला था ये इनिशियल एंड फाइनल कोर्सेज अलग अलग होंगे। तो वो समझ नहीं आया, क्योंकि in case we are going on equator, so the starting cost will be 90 and the final cost will be also 90, and it is also a great ओके circle. ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। मैं तुम्हें अब एक स्पेशल चीज, ग्रीनविच मेरिडियन, 90 ईस्ट, 90 वेस्ट, एनी मेरिडियन, इक्वेटर और मेरिडियन, ये दोनों के दोनों ग्रेट सर्कल हैं। बट ये जो दो ग्रेट सर्कल हैं, इक्वेटर और मेरिडियन, ये स्पेशल ग्रेट सर्कल्स हैं। स्पेशल ग्रेट सर्कल्स क्यों है ये स्पेशल? क्योंकि बेटा ये ग्रेट सर्कल भी हैं और ये रंब लाइंस भी हैं। रंब लाइंस का मतलब होता है जो मर्केटर चार्ट पे स्ट्रेट लाइन अपीयर होती है। सो आप अगर इक्वेटर को देखो तो इक्वेटर आपको मर्केटर चार्ट पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। आप अगर मेरिडियंस को देखो तो सारे के सारे मेरिडियन आपको मर्केटर चार्ट पे स्ट्रेट लाइंस, वर्टिकल लाइंस दिखाई देंगे। So these two great circles are special great circles, क्योंकि ये ग्रेट सर्कल भी हैं और रंब लाइन भी हैं। इन अदर वर्ड्स, ये ग्रेट सर्कल मर्केटर चार्ट पे आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देते हैं। सो अगर आप इन दोनों ग्रेट सर्कल्स पे चलोगे, यू आर मूविंग ऑन द इक्वेटर और यू आर मूविंग ऑन ए मेरिडियन, तो आपका कोर्स चेंज नहीं होगा। बट इन दोनों को छोड़ के किसी भी और ग्रेट सर्कल ट्रैक पे अगर आप चलोगे तो आपका कोर्स चेंज होता रहेगा, क्योंकि वो मर्केटर चार्ट पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। When we are moving on a great circle track. Now, beta, we have seen that when we are finding the great circle distance, we basically solve this PAB triangle. इस PAB triangle को हमने कोसाइन फॉर्मूला की एप्लीकेशन के साथ सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है? We know side PA, it is the colat of our starting position A. We know side PB, it is the colat of our destination position B, and we also know this angle P. Now this angle P is the angle at the pole contained between meridian of A and meridian of B. So this is the D long between our initial and final position. We know this D long also, because both the longitudes are provided to us in the question. So you see, we have two sides of this triangle and the included angle. We apply the cosine formula and we find out the great circle distance. So the great circle distance is found out from the side AB. Now beta, once we have this side AB known to us, ये AB side जैसे ही हमें पता चलती है, we know all the sides of this triangle now. We know side PA, which was already known to us. We know side PB, it was already known to us, colat of B. And we know side AB also now, which we have calculated using the cosine formula. Now, once you have all these three sides of the spherical triangle, you can now find out angle A and angle B of this spherical triangle. तो ये ग्रीन कलर में बेटा मैंने मार्क किया है दिस एंगल A एंड दिस इज एंगल B.
ये दोनों के दोनों एंगल जो हैं ये हम कोसाइन फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं, बिकॉज यू सी इन कोसाइन फॉर्मूला if all the three sides of the triangle are known to us, we can find any of the angles. So when we are finding our courses, हम सबसे पहले ट्रायंगल PAB के एंगल A और एंगल B को फाइंड आउट करते हैं। नाउ बेटा वन वर्ड ऑफ कॉशन हियर, जब आप ये एंगल्स को फाइंड आउट करोगे तो आपने AB साइड को डिग्री और मिनट्स में ही यूज करना है, जैसे वो कोसाइन फॉर्मूला से हमें मिलती है। डोंट यूज इट इन मिनट्स। मिनट्स में हमने AB साइड को निकाला था बिकॉज वी वांटेड टू फाइंड आउट द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस। अब हमने फर्दर कैलकुलेशन के लिए मिनट्स वाले पार्ट को, मिनट्स वाले फॉर्मेट को यूज नहीं करना है। जब भी हम कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल ऑलवेज यूज द डिग्री एंड मिनट फॉर्मेट। So AB side, when it is used in the formula, is used in degrees and minutes only. So with the three sides, we will find out angle A and angle B. Now these angles, angle A and angle B, are going to give us great circle initial and final courses. इन सम केसेस इट इज पॉसिबल कि हमारा इनिशियल या फाइनल कोर्स इस एंगल के इक्वल आ जाए, बट किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कोर्सेज इन एंगल से डिफरेंट हो। तो वी विल नाउ सी हाउ फ्रॉम दीज टू एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी, वी कैन फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल कोर्स। ओके, अब बेटा इस स्लाइड में मैंने जो हमारी PAB ट्राइंगल थी उसे जूम इन कर दिया है, बाकी की जो अर्थ है उसे हमने रिमूव कर दिया है। तो वी हैव द PAB ट्राइंगल हियर। सबसे पहली चीज जो हम फाइंड आउट करते हैं वो है ग्रेट सर्कल डिस्टेंस AB, और फिर उसके बाद यूजिंग द AB साइड वी फाइंड आउट एंगल A एंड एंगल B। नाउ लेट्स अज्यूम कि हमने ये एंगल A को कोसाइन फॉर्मूला से फाइंड आउट किया एंड दिस एंगल कम्स टू बी 30 डिग्रीज। ओके, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं टू एक्सप्लेन टू यू कि हमारा कोर्स कैसे निकलेगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि कोसाइन फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है एंड अवर एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सिमिलरली लेट्स अज्यूम दैट एंगल B we have calculated using the cosine formula and it comes to 60 degrees. Now basis this, we will find out what is our initial and final course. Now beta, this method sometimes looks complicated, so इसे अब आपने ध्यान से समझना है। Initial और final courses find out करने के लिए we use 1, 2, 3 method. What is this 1, 2, 3 method? सबसे पहले तो बेटा we make a rough diagram of the shape at the starting point which is A and at our destination which is B. So let's make a rough diagram of the ship at both these positions. तो ये बेटा हमने A पॉइंट पे अपने शिप की एक रफ डायग्राम बना दी है। Now let's make it at point B. We have the rough diagram of the ship at point B also now. ये पहला स्टेप है, एक रफ डायग्राम हमने यहाँ पे बना देनी है। अब बेटा सेकेंड थिंग, we have to follow this 1, 2, 3 method and we can measure the course from this diagram as an angle. अब ये कैसे measure करना है हमने, और ये 1, 2, 3 मेथड क्या है। नाउ नंबर 1 इज एट बोथ दीज पोजीशन, पोजीशन A एंड पोजीशन B, इन दोनों पोजीशन पे वी हैव टू आइडेंटिफाई नॉर्थ डायरेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट एट पॉइंट A. हाउ डू वी आइडेंटिफाई द नॉर्थ डायरेक्शन हियर? We know all the meridians run in north-south direction. All the meridians run north-south.
Now we know in this diagram, PA side is the meridian of point A. So this tells us that this particular direction in which the north pole is, okay, this is the north pole which you are seeing on top. This P point is the north pole. So the direction in which the north pole is the northerly direction. So let's mark this northerly direction here. So I have marked it using this N point beta. So this N point on the meridian shows the northerly direction. Now similarly, if you go to our destination position B, we know PB is the meridian, P point is the north pole. So the direction of the meridian towards the north pole is the north direction. So let's mark out the north point here also. हमने ये नॉर्थ पॉइंट को भी बी पॉइंट की डायरेक्शन के साथ यहाँ पे मार्क कर दिया है. तो दोनों प्लेसेस पे ए पे और बी पे हमें नदरली डायरेक्शन का पता चल गया है. So this is the first step of 1, 2, 3. Identify the north direction. Now in the second step, you have to go clockwise from here. हमने इस नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल को मेजर करना है and we have to go clockwise. So from north direction, we will start measuring the angle in the clockwise direction. और हमने कहाँ तक इसे मेजर करना है? We go up to the ship's head. So north direction से एंगल मेजर करना शुरू करेंगे. We will go clockwise and we will go up to the ship's head. So let's do that at point A. So मैंने नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल मेजर करना शुरू किया. यू कैन सी दिस एरो गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड आई गो अप टू द शिप्स हेड. अब बेटा ये जो ब्लू कलर का एरो आप देख रहे हो, दिस एरो बेसिकली गिव्स अस आवर इनिशियल. इनफैक्ट ये जो 1, 2, 3 में प्रोसेस हमने फॉलो की है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर शिप्स कोर्स. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द शिप्स कोर्स? It is the angle between the meridian and the ship's head measured in a clockwise direction. So angle between the meridian and ship's head measured in a clockwise direction gives you the course of the ship in the 3-figure notation or true notation. Now fortunately, जो ये angle हमारे पास आया है, this angle which is marked, this angle is equal to angle A of our triangle. तो हमारा जो इनिशियल कोर्स है ये फॉर्चुनेटली हमारे एंगल A के इक्वल आ गया है एंड वी कैन सी हियर दैट आवर इनिशियल कोर्स इज 030 degrees true. Now as I told you, it will not always be the case. Fortunately this time the angle has come equal to the course of the ship, but it will not happen always. We will see at the final destination position, at position B, the angle would be different and our course would be different. So let's follow the same process at point B. So what we do at point B, we have already identified north. Now we will start to measure angle from the meridian, that is from this north direction. We will go in a clockwise way and we will go up to the ship's head. So you can see this blue color arrow here. From the meridian up to the ship's head in the clockwise direction. This is our final course. अब बेटा ये जो आर्क हमारे पास आई है at destination position, this angle is not known to us. This blue color arc or blue color angle is not known to us. What we know is the inside angle of the triangle. हमें तो ट्राइंगल का इनसाइड एंगल पता है. इनसाइड एंगल हमने कोसाइन फॉर्मूले से निकाला था and that angle is 60. Now how do we find out the external angle? Now for this beta, on a great circle track,
ग्रेट सर्कल ट्रैक पे कहीं भी आप कोई भी पॉइंट ले लो, and if you measure a complete angle from one direction to other direction in which the great circle go, this will always be 180 degrees. Just like it happens with a straight line, you measure an angle on a straight line at any point, it will be a 180-degree angle. Exactly same way, on a great circle, if you measure the angle at any point, this angle would be always 180 degrees. Now a doubt can arise in your mind, sir, these are curved lines, so how can the angle be 180? Okay. Now beta, these lines are curved just to show you that this diagram which we have made, PAB triangle which we have made here, is a 3D diagram. It is a curved diagram which we are showing on a plane surface. That is why the lines are curved. Otherwise, if you look at a great circle on the surface of Earth, it appears exactly as a straight line. So now we know that this total angle at point B, let me change the color to red. So this total angle at point B is 180 degrees. We know the green color angle, the inner angle B of the triangle is 60 degrees. So what will be the external angle in our case? It would be 120 degrees. So once you know this angle, from the meridian going in the clockwise direction up to the ship's head, this angle is our final course. So we know here our final course is 120 degrees true. So this is how we obtain the initial and final courses on a great circle track. Always remember this 1, 2, 3. This is basically taken from the definition of the course. Identify and start from north, go clockwise and go up to the ship's head. So if you measure an angle using this 1, 2, 3 method, you will obtain the course of the ship in 3-figure notation or in true notation. Now, let me show you another case in which it becomes slightly more complicated. In this particular case, the ship was going in the easterly direction. A to B, we were moving in the easterly direction. Now let's move the ship in the westerly direction. So once you see that, it will become clear in your mind. Okay. Any doubts which they are coming in your mind, just note them down in your notebooks. Once I finish, I will be asking you all the doubts and we will be clarifying them one by one. So let's take a case when the ship is going on a westerly course. So now you see, I have taken my starting position A here at this point, and my destination is here now. Okay, they are reversed now. So we are going from A to B. Now we are going in this particular direction. And let us say the angles are the same. Okay, that means let me mark it in green color. Let's mark the angle in green color. That means this inner angle here is 60 degrees. And angle at this place is 30 degrees, which we had taken earlier. So we will take the same example here. Now we want to find our course at point A and at point B. So how do we do that? So let's first make a rough diagram of the ship. So we make the rough diagram of the ship at point A. Now let's make the rough diagram at point B. We have the rough diagram of the ship at point B now. Now let's follow 1, 2, 3 at point A. We identify and start from north. North is identified. That is the direction in which the meridian goes towards the North Pole. We start from that north point. We go clockwise
and we go up to the ship's head. So you can see this blue color arc, blue color angle there. So starting from north, going clockwise, going up to the ship's head. If we find out this blue color angle, our initial course would be known to us. Now, how to find this angle? Now, beta, if you start from north, you go in the clockwise direction and you reach back to north, this total angle would be 360 degrees. Now, the green color angle is 60. So, if you want to find the blue angle, it will be 360 minus 60. So, that will be 300 degrees too. Let me mark the 360-degree angle also in red so that it becomes clear to you. What I was saying is, if you start from north, you go in the clockwise direction and you come back to north, then this complete angle would be 360. So red color angle is 360, green color angle is 60 degrees, blue color angle will be red minus green, that is 360 minus 60, that is 300 degrees true. So that is our initial course now. So you can see here that when we are moving in the westerly direction, the angle of the triangle is something else. It is 60 degrees, whereas our initial course is something else. It is 300 degrees. Now let's do the same thing at the destination also. At point B, we have identified the north direction. This is the direction in which the meridian goes. Now let's start from north, go clockwise and go up to the ship's head. This is where our ship's head is. So we have to find this blue color angle now. So how do we find that? Now let me tell you. Now beta, we know in geometry that if two straight lines intersect, then the opposite angles are always the same. Now the same thing is applicable to great circles also. So we see one great circle PB line, which is the meridian of B, another great circle AB line, which is our great circle track. They are intersecting at an angle of 30 degrees. This is the angle of intersection. So in the opposite direction also, if I make this angle, see this red color angle which I have made, this angle would also be 30. So this red color angle is 30. Now let me pick up another color. Let's pick up green. Okay, green is already used. Let's pick up yellow, then orange. Now the meridian of B, Papa Bravo, from here to here. This is a great circle. So this orange color angle has to be 180 degrees. We just now discussed that on a great circle track, if you measure a complete angle at any point, it will be 180. So the yellow angle is 180 degrees. The red angle is 30 degrees. So you see blue angle is a addition of yellow and red. So it becomes 180 plus 30 and the blue color angle comes to 210 degrees true. So this is our final course. So this is the example where the ship is going in the westerly direction. And you can see in both the cases, the angles of the triangles were something else. They were 60 and 30. And our initial and final courses are something else. They were 300 and 210. Now, always remember, beta, one thing to remember is that using this method, you will always find the course in true notation or in three-figure notation. If you want to find it in quadrantal notation, if you want to find it, then you will have to convert it. Okay.
we know how to convert true courses into quadrantal course. So first you obtain the three-figure notation or true course from using this 1 to 3 method. Once the true course is known, it can be converted to the quadrantal notation. So let me give you one more example. After that, I will take up all your doubts one by one. So in that example, let's go into the southern hemisphere. So now we have gone into southern hemisphere. Both our positions, position A and position B, are in the southern hemisphere. That's why you see I have taken the south pole here. So in the southern hemisphere, we make the PAB triangle with the south pole. So let's follow the 1 to 3 method here. Let's make a rough diagram of the ship at point A. Let's make a rough diagram at point B. We have the ship here. Now let's identify north. Now you see this pole which we are seeing is the south pole. So north direction will be the direction of the meridian in the opposite direction. So if you extend it, this is going to be the north direction. Similarly, at point B, this is going to be the north direction. So we have done step number 1. North is identified. Now let's start measuring the angle from north. We go clockwise and we go up to the ship's head. So you see this blue color angle here. It will represent the initial course. Let's assume the angles are same. Let's assume that this angle is 30 degrees and this angle is 60 degrees. This 30 and 60 we will obtain from the cosine formula. So now if this yellow color angle is 30, let me change to red color. We know from north to south, this red color angle is 180. So the blue color angle which we want to find will be red angle plus the yellow angle. So 180 plus 30, it will be 210 degrees true. So this is going to be our initial course. Now let's come to point B. We start measuring the angle from north. We go clockwise and we go up to the ship's head. This is where our ship's head is. Now this yellow color angle inside is 60-degree angle. So the angle opposite to it, that is this red color angle, will also be 60. So this also is 60 degrees. We know a complete angle from north to north. The green color angle which I have made is 360. So you see green angle is 360, red color angle is 60. We require the blue angle. It will be equal to green minus red. So 360 minus 60. Our course comes to 300 degrees true. So this basically completes all the possible combination of courses and latitudes which can be asked to us. Example, I will go back to example number 1, 2 and 3. और जितने भी डाउट्स आपको आ रहे हैं वन बाय वन यू कैन आस्क दोज डाउट्स. सो सबसे पहले तो ये लेटेस्ट वाली एग्जांपल ले लेते हैं. लेट मी गो बैक टू द प्रेजेंटेशन अगेन. सो अब बेटा इसमें बताओ ये क्लियर हुआ आपको कि फोर्सेस कैसे निकालने हैं या कोई डाउट आ रहा है? क्लियर है सर. ओके, वेरी गुड बेटा. इससे पहले जो एग्जांपल हमने ली थी, लेट्स गो बैक, दिस वाज द एग्जांपल. इसमें बेटा कहीं पे कोई डाउट आ रहा है? No, sir. Very good. So this was the first example. So this is also clear, beta.